अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आप सब लोग कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो टुडे इन दिस क्लास वी विल सी अबाउट नाउन एंड इट्स टाइप्स। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो आज हम नाउन के बारे में जानेंगे। नाउन क्या है और उसके कितने टाइप्स है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आर यू ऑल रेडी? सो नाउन एंड इट्स टाइप्स। नाउन का मतलब क्या है? नाउन इज नथिंग बट अ नेमिंग वर्ड ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। नाउन इज नथिंग बट अ नेमिंग वर्ड। किसका नेमिंग वर्ड है? ऑफ अ पर्सन या प्लेस या थिंग या फिर आइडिया। सो उसको हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी एन एग्जाम्पल। जेम्स, राकेश, these are the names of person. So Hyderabad and Bombay are the names of places. Pen, glass, table, these are the names of things. Love, beauty, thought, joy, these are all the names of idea. Understood? These are the names of idea. Dog, cat, lion, these are all the names of animals. Understood? So these are the examples of nouns. So these are the names of person. Hyderabad, Bombay, names of places. Pen, glass, table are the names of things. Love, beauty, thought and joy are the names of ideas. Dog, cat, lion are the names of animals. So understood everyone? So let's move on to its types. Types of noun. Noun कितने types के हैं? Proper noun, common noun, abstract noun, concrete noun, countable noun, uncountable noun, compound noun and collective noun. These are all the types of nouns. Let's see one by one. What does it actually mean? Okay? चलो. So first one is proper noun. प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? इट इज द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर और सिंगल पर्सन और प्लेस और थिंग। जब भी कोई हम पर्टिकुलर या फिर सिंगल पर्सन या प्लेस या थिंग के बारे में हम पर्टिकुलरली अगर कहते हैं तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एंड ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, जेम्स. जेम्स इज द name of person. This is the name of person. Australia, this is the name of place. Computer, this is the name of thing. आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ट्यूसडे. ट्यूसडे ऑल्सो comes under proper noun because that is particularly we are mentioning about the day of the week, so it also comes under proper noun. हम जब भी हम कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. सो सेकेंड वन इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन, व्हाट डज ए कॉमन नाउन मीन? अ नेम गिवन टू समथिंग विच इज कॉमन फॉर मेनी थिंग्स और मेनी पर्सन्स और मेनी प्लेसेस. सो एग्जाम्पल्स आर स्टूडेंट्स, सिटी. स्टूडेंट इज अ कॉमन नाउन. वाई? बिकॉज क्लास में मौजूद हर एक बच्चे को हम एक कॉमन नेम देते, दैट इज स्टूडेंट्स, whether she is a girl or a boy. Like that, स्कूल में जो कोई भी हमें पढ़ाता है, whether she is a ma'am or a sir, हम उनको टीचर ही कहते हैं. Okay? So these are the examples of common noun. Understood? So let's move on to the next one. What that is? Abstract noun. What is abstract noun? Abstract noun is something that which we cannot see but we can feel. It refers to ideas, qualities and conditions. So abstract noun is nothing but हम उसको देख नहीं सकते but we can feel it. उसका एक physical existence मतलब नहीं होता है. For example, see, happiness, sorrow, इसको हम देख तो नहीं सकते but we can feel it. Truth also, truth, lies, anger, good, beautiful, these are all comes under abstract noun. Understood?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते बट वी कैन फील इट, दैट इज व्हाट एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज. एग्जांपल्स हैप्पीनेस, sorrow, truth, lies, anger, good, bad, beautiful, handsome, these are all comes under abstract noun. So the fourth one is concrete noun. Concrete noun का मतलब क्या है? Concrete noun is exactly opposite to abstract noun. It refers to the things we can able to see. It has physical existence. Concrete noun, it is totally opposite to abstract noun, because abstract noun को हम देख नहीं सकते but we can feel it, whereas concrete noun को हम देख सकते हैं, उसका एक physical existence होता है. For example, pen, table, ball, sugar, water, bag, bottle, these are all comes under concrete noun. Understood? काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है? जो भी हम नाउन्स को काउंट कर सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सी द डेफिनेशन. द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड इजीली आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. इट काउंट्स इन कार्डिनल नंबर. Cardinal, do you know what is cardinal number? Cardinal means 1, 2, 3, 4, 5. These are all cardinal numbers. Do you know what is ordinal numbers? Ordinal numbers are nothing but first, second, third, fourth. These are all ordinal numbers. Understood? Let's see the examples of countable nouns. 1 car, 2 persons, 5 pens, 5 erasers, 4 pencils, 6 pizzas. The sixth one is uncountable noun. Uncountable noun का मतलब क्या है? उस नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं जो कि हम गिन नहीं सकते. The nouns which cannot be counted. The nouns which cannot be counted are called uncountable nouns. For example, water, oil, air, salt. This we cannot count it. क्या हम कह सकते हैं 1 water, 2 water, 3 waters कह सकते हैं? No, we can't say. So always remember, जब भी कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में या फिर लिक्विड फॉर्म में होता है उसको वो that all comes under uncountable noun. Keep that in mind. Okay. So for example, meat also uncountable noun. Meat, M-E-A-T, meat. Honey, cheese. These are all comes under uncountable nouns. Understood? एक नोट हमेशा याद रख लीजिए, abstract noun and proper nouns are always non-countable nouns or uncountable nouns. Abstract noun मतलब जो हम नहीं देख सकते but we can feel it, like truth, beauty, love, thought, ideas all comes under abstract noun. And proper noun पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या पर्टिकुलर इंसान के बारे में जो कहता है उसको हम प्रॉपर नाउन. ये दो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स ही होते हैं बिकॉज वी कैन नॉट काउंट देम. सो second point is common nouns and concrete nouns are both countable and uncountable, whereas common noun और concrete मतलब जो भी हम देख सकते हैं, which is absolutely opposite to abstract noun, that is concrete noun. So the things which we can see and also feel. And common nouns are a common name given to a particular noun. Those are common nouns. Common noun or concrete nouns are both countable and uncountable nouns. So this note you have to put it in mind. Understood? Let's see once again. Abstract nouns and proper nouns are always uncountable nouns, whereas common noun and concrete nouns are both, ये काउंटेबल भी हो सकते हैं या फिर अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं. अंडरस्टूड? सो द सेवेंथ वन इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन, इसी से हमको पता चलता है. लेट्स सी द डेफिनेशन. अ कलेक्टिव नाउन इज गिवन फॉर ए ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल्स एट्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, टीम, फैमिली, कैटिल, और भी ले लीजिए, फ्लॉक. Flock, do you know what is flock means? Flock is nothing but a group of birds or group of sheep. Troop भी आता है इसमें. Troop, soldiers. These are all comes under collective noun because एक
एक ग्रुप को हम एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल टीम, फैमिली, कैटल, सोल्जर्स, ट्रूप, फ्लॉक, etc. अंडरस्टूड. लास्ट वन इज कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन का मतलब क्या है? अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज मेड विथ 2 or more words or 2 or more nouns. Then we call it as compound noun. For example, bedroom. Bed is one noun and room is another noun. If we combine both the nouns, it forms a single noun. Bedroom, seafood, football, toothbrush, a red rose, honey bee. अंडरस्टूड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब भी हम दो नाउन्स को कंबाइन करने पर ये एक नाउन फॉर्म होता है तो उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं. अंडरस्टूड. बेडरूम, सी फूड, फुटबॉल, टूथब्रश, हनी बी, motorcycle, these are all comes under compound noun. I hope guys you all understood this topic very well. So guys, if you have any doubts regarding this topic, feel free to comment me in the comment section. I'll answer you there. And so thank you so much guys for watching this video. If you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel and share to your friends and family members. Thank you so much. Allah Hafiz.